से तुमसे शादी हुई है, सुनी तो रहा हूँ। हाँ सुनते ही तो हो, कुछ करते तो नहीं हो। हाँ ठीक है, आगे बोलो क्या करना है। आज मैं और मेरे दोस्त शॉपिंग करने जा रहे हैं, बट बच्चों को कौन संभालेगा ये टेंशन है। लो इतनी सी बात। मैं हूं ना। बट समटाइम ना बच्चे इम्पॉसिबल हो जाते हैं। है मीनामा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? छोड़ ना, मैं संभालूंगा बच्चों को। दैट्स ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। Hello, the program is on. Sudhir has committed to take care of all our children. ओए, आई तो तुम हमारे बच्चों के बारे में बोल रही हो। आई कैनॉट मैनेज ऑल योर फ्रेंड्स चिल्ड्रन ऑल्सो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुमने प्रॉमिस किया था। ओके, मैं चली। जाने वालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ तुम्हारी तरह। अंकल you want to hear a story? Uncle you want to go? आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। No story, हमें निंजा स्टोरी सुनना है। नहीं, प्लीज टेक अस आउट अंकल। क्या करूं? हाँ ये ठीक है, मैं बच्चों को इसको म्यूजियम लेके चलता हूँ। एक तीर से दो निशाने। ओके चलो सब, हम बाहर भी जाएंगे और मैं तुम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा जो कि यूनिवर्स का किंग है, जो कि सबसे सुंदर है, जो सबसे बलवान है, जो सबसे धनवान है। टेल मी, do you want to hear about such a personality? Yeah, please tell. Yes, tell fast अंकल। चलो let's go out first. Yay! आएंगे और आप लोगों को मास्टर ऑफ द यूनिवर्स की कहानी भी सुनाएंगे। एंजॉय एंड बी गुड, ओके? हरे कृष्णा बच्चों। अंकल कृष्णा ये है। Hare Krishna is the way of wishing people. I will tell you more about this in the later part of our trip. Okay? Okay। By the way, सुनो, there are some rules which we need to follow. We should not make too much sound. ठीक है? Okay, हाँ, जो हुक्म जहाँ पना। Hey kids, now you can see all the bad characters in this room. Watch out! This is Kamsa, the leader of the demons. And next to him, you can see Trinavarta, the whirlwind demon. Oh, Saudhan! This is Arishtasura, the bull-faced demon. Are really horrifying. I'm waiting for them to be punished. Don't worry, it will happen soon. Now, you can see all the good people. They are Vasudeva and Devaki. They are the parents of the master of the universe. I'm here. And here, they are Nanda Baba and Yashoda Maya. They are also the parents of the master of the universe. And they are Rishabhanu Maharaj and Kirtida. क्या तुम जानते हो इनके साथ वो सुंदर कन्या कौन है? ये राधा रानी ना? Yes, correct. And you know what? Radharani is the energy of Krishna.
शक्तिमान कहाँ है? Very nice, Tanishka. We will now see the appearance of the Supreme Lord. तुम्हारे शब्दों में शक्तिमान। उससे पहले मुझे ये बताओ, why Lord Krishna appears on this earth planet? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. In order to deliver the pious and to annihilate the miscreants, as well as to re-establish the principles of religion, the Lord appears. समझे? Yes. चलो चलो, let's move on now. Hey Ishwar, you are the supreme controller. You are the supreme personality of Godhead and the supreme absolute truth. You have so kindly appeared in my home. In spite of being the supreme controller, the purpose of your appearance in this world is to kill the demonic rulers who are in the dress of royal princes, but actually are the demons. हे पुरुषोत्तम, मैं जानती हूँ कि आपका ये रूप ऋषि मुनि और देवी देवगण भी देखने को तरसते हैं, परंतु मुझे मेरे भाई कंस से भय है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप वापस एक शिशु का रूप धारण कर लीजिए। मेरे प्रिय माताश्री व पिताश्री, मैं आपकी मेरे प्रति चिंता और कंस के भय को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप तुरंत मुझे गोकुल लेकर जाएं और वहाँ यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया है, मुझे वहाँ छोड़कर यशोदा की पुत्री को यहाँ लेकर आ जाइए। कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्णा। कृष्ण का मतलब है वो जो सबको आकर्षित करते हैं। भगवान सबको आकर्षित करते हैं, यही भगवान का परिभाषा है। तुम लोगों ने कृष्ण का पिक्चर्स देखे हैं ना? We see that he attracts the cows, the calves, the birds, bees, trees, plants, and even the water in Vrindavana. वो सारे ब्रजवासियों को, पांडवों को और सारे मानव समूह को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसीलिए उनको कृष्ण नाम दिया गया है। See how he is attracting Nanda Baba. यशोदा, हमारा कृष्णा कहाँ है? मेरा कान्हा बच्चों के संग खेल रहा होगा। अच्छा, सुनो यशोदा, मैं तनिक काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे, हमारा पादुका कहाँ है? Krishna attracted demons also, you know. क्या? कैसे? See for yourself now.
yourself, dear. इस तरह कृष्ण ने कई असुरों का वध किया. Then he went to Mathura with his brother Balarama. Prabhuji, why Krishna went to Mathura? Govind, it was time to punish and kill the leader of all the demons. He was the person who put Devaki and Vasudeva in the jail. He was the person who killed the 6 brothers of Krishna. But Kamsa knew Krishna had arrived, and he placed a mad elephant to attack and kill the 2 brothers. But Krishna killed the elephant and entered the arena holding the tusk of the elephant. सानुरा, मुस्तिका, जाओ और इन बालकों को मसल दो. मैं इनको छोड़ूंगा नहीं. मामा, मैं आ गया. आप 10 वर्षों से मुझे ढूंढ रहे थे ना? आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया हूँ. No, beta. Krishna has given us eternal instructions, in which Arjuna asked, what should be the purpose of our life? And the Supreme Lord gave his instructions, which are like the manuals for the whole mankind. Do you know what the name of the manual is? Prabhu, it's called Bhagavad Gita. Ah, very nice, Tanishka. Come, let's see what Krishna says in Bhagavad Gita.
परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। But Prabhuji, why Krishna did not come in Kali-yuga? Now you should have come, na? Yes, Krish, the Lord did appear in Kali Yuga 500 years ago as Sri Chaitanya Mahaprabhu. By inaugurating the Sankirtana movement, he taught us the Yuga Dharma of chanting the Lord's holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simply by chanting this Hare Krishna Mahamantra, which is the great chant for deliverance, people can go back to Goloka Vrindavana and serve the Lord eternally. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna महाप्रभु ने बोला था कि उनके एक सेनापति भक्त आएंगे जो विश्व भर में हरिनाम का प्रचार करेंगे। वो सेनापति भक्त थे श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की और विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। प्रभुपाद है तो तबे की है तो जीवन पाहित की से Hallowed be thy name, my Lord, Krishna, the personality of Godhead. Let your holy name be glorified. This is our movement. It is not a sectarian, it is very scientific movement. Scientific movement, because at the present moment we are all godless, forgotten what is God and what to speak of His name. They do not believe in God and what to speak of His name, fame, His place, His activities, His form, His quality. How we can know? There is no educational system about the science of God. This movement, Krishna consciousness movement, is teaching the science of God. And if you accept the name of the God, name of God, Krishna, this is also a fun, another system also, then you will be able to associate with God immediately, because God is absolute. Absolute means there is no difference. Here in this material world, the name and the substance differ. But
in the transcendental world, Krishna is the name of God and it is God. So, by chanting Hare Krishna, you are directly in contact with God. This is the meaning of Hare Krishna. प्रेमा कल्पतरु निताय गौरीरा कृपकमलविभारे नीरवदि जय पतकहृदया नीरवदि जय पतकहृदया तुम्हारे शरण गाए तुम्हारे शरण Where can we meet Srila Prabhupada? Srila Prabhupada ended his earthly pastime in the year 1977, but his dedicated disciples continue to carry on his mission all over the world. One such jewel among his disciples is His Holiness Jayapataka Swami, who for the last 5 decades has tirelessly worked to spread the mission of Lord Chaitanya and Srila Prabhupada all over the world. Do you want to see him? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So children, tell me, what do you think of Krishna now? He is the superhero. He's the most attractive. He is very powerful. Prabhu is the supreme Lord. Wow, that's very nice. आज वो कृष्ण का जन्मदिन है and we have a big celebration. Why don't you all go and bring your parents also? Yes. Papa, Papa, अरे अरे क्या हुआ? we had such a great time, you know, Papa? ठीक है, we are getting late for movie. चलो चलो. But Papa, I don't want to see movie. आज जन्माष्टमी है, and you have